हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू Permutations। कैसे हैं सब लोग? हाउस यू ऑल? Fine, ma'am. So exams are coming. Yes, ma'am. So have you seen this year JEE reviews? How's the paper? Anyone who just read? किसी ने भी पढ़ा या नहीं? किस साल का JEE का पेपर कैसा आया? या नो इंटरेस्ट? नो आंसर, राइट? मतलब किसी ने नहीं देखा तो एक बार देखना. So dear friends, as in the last session we have done already basics of permutation and combination. Agree? Yes, ma'am. Okay. So today we will have just some condition based practice session of combined permutation and combination. Okay? Clear? Yes, ma'am. Okay. So very first thing, see, it was a question in 2023. Can you see? The number of 4-letter word with or without meaning, each consisting of 2 vowels, 2 consonants, which can be formed from the letters of the word universe. So my dear friends, firstly see in the universe how many vowels are there. 1, 2, 3 vowels are there. Yes. So how many vowels are there? 3. And how many consonants are there? 5. Agree, Diya? Neha? Yes, ma'am. Okay. So what the question is saying? Question saying 4-letter word, each consisting 2 vowels, 2 consonants. It means 3C2 into 5C2. What do you say? Yes, ma'am. So question is clear to everyone? Yes, ma'am. Any doubt in this part? So quite simple question was there in 2023. Agree? Yes, ma'am. Great. So one thing you missed. What? They said the number of 4-letter word with or without meaning. Okay, ji? So the question is mixed. It means this is a selection takes place. Right, everyone? So if I make it 4 factorial, it means the word can be permutated with itself. Clear? Yes, ma'am. Okay. Consider a class of 5 girls, 7 boys, a number of different teams consisting of 2 girls, 3 boys that can be formed from this class if there are 2 specific boy A and B who refuse to be a member of same team. So question is clear. It was also PYQ 2019. किसी को अटेम्प्ट करना है? ये मैं कर रहा हूँ. Yes, friends. Yes, friends. Is it audible? Yes, ma'am. But I can't hear you all. शायद आप लोग बोल रहे होंगे. क्या कहते हो?
नहीं, नहीं हो। अरे इतना सन्नाटा क्यों है, क्या हो गया? स्ट्रेस है किसी बात का क्या? इतना सन्नाटा क्या हुआ? स्ट्रेस है? दुर्गेश ने आंसर मुझे दे दिया 300। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी और के पास कोई और आंसर है? दुर्गेश आंसर करेक्ट है, कैसे किया डियर? दुर्गेश व्हाट्स अप्रोच? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों पे छोड़ देते हैं, अगर कोई आंसर नहीं करे सो लेट इट बी ऑन यू, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? चलेगा ना सबको? मैम आप बता दीजिए। मतलब मुझे तो आप लोगों से आंसर चाहिए। अब दुर्गेश ने आंसर दिया, मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे किया। अगर आपको इसमें नॉर्मल सिलेक्शन करनी होती, 7 बॉयज में से 3 बॉयज लेने हैं और 3 में से 2 गर्ल्स लेनी है, तो आप सिलेक्शन कैसे करते? मैम 300 आएगा। तो आप यही करते ना कि 7C3 कर लेते और आप बोलते 5C2 कर लेंगे, राइट? यस मैम। और जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास 350 आया। बट क्वेश्चन सेड कि इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉय, 2 स्पेसिफिक बॉयज है ए और बी, जिन्होंने एक टीम के मेंबर बनने से रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं बनेंगे, तो इसको करने का क्या ऑप्शन रहेगा? आप कैसे करोगे कि भाई अगर वो एक टीम में नहीं है तो उनको कैसे सोचा जाएगा? मैम 3 केसेस बनेंगे। हम्म, 3 केसेस बनेंगे। कैसे? मैम एक बार एक ए रहेगा तो बी नहीं रहेगा, तो गर्ल्स में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 5C2 ही रहेगा। 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं, राइट? यस मैम। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि भाई आपके पास 3 बॉयज बनने हैं, उसमें से 2 बंदे हैं जो B1 और B2, जिन्होंने आपको बोल दिया कि हम इस टीम के मेंबर, एक टीम के मेंबर्स नहीं बनेंगे, ठीक है? यस मैम। तो अब ये जो मेरे को 3 बॉयज लेने हैं, तो इनको अगर मैं ये बोलूं कि भाई वो 3 जो बंदे हैं उनको मैंने टोटल सिलेक्शन में से रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया? टोटल सिलेक्शन में से, मतलब मैंने बोल दिया कि वो पर्टिकुलर एक ही टीम में इंक्लूडेड थे, तो इसका मतलब अगर वो एक ही टीम में इंक्लूडेड थे तो वो 2 में से अब आपको सिलेक्शन एक ही बॉय की करनी है। यस मैम। 7 में से भी मतलब 5 में से एक लेना है, और गर्ल्स तो सारी की सारी लेनी है, 5 में से 2। ये जो जितने भी वेज बनेंगे ये वो वेज है जो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ये क्या कौन से वेज दे रहे हैं? ये दे रहे हैं जब बोथ आर इन सेम टीम। तो आपने जब रौनक इसको करा तो इसने 50 दिया, तो आपको 350 में से 50 को माइनस करना था, तो 300 करेक्ट आंसर आना था बच्चों। क्या बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए, ये 2022 में आया था। अ क्लास बी कंटेन्स बी बॉयज, जी गर्ल्स। एक क्लास के पास बी बॉयज है, जी गर्ल्स है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 boys 2 girls from the class is 168, तो b plus 3g कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे कि b में से 3 लिए और g में से 2 लिए। क्लियर? और ये सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा है, परमुटेशन की तो नहीं कर रहा डियर बच्चा पार्टी। It is only talking about the selection, no permutation is there. यस मैम। So this will be equals to 168. Solve this part, you will be able to calculate b, you will be able to calculate g, right? So just find out b and g, put the value over here. Is the question is clear? यस मैम। Anyone wants to solve by their own or they will solve at their home? किसी को लग रहा है कि अभी करना है और किसी को लग रहा है कि मैम कर लेंगे। मैम अभी
हाँ, अभी या घर पे जैसा भी आपका है. क्लियर. हाँ जी. Anyone who is attempting? Okay. Yes, done. Done, बच्चों. अब need रौनक. Done. Or need my help? No, ma'am. Need help? Yes, ma'am. Okay. So see how to solve this part. It's a little bit tedious because it's a PYQ only, so calculation definitely going to be hard. So just go ahead and see. It's given that BC3, right? BC3 and GC2 is equals to 138. Apply the formula of combination. You will get B into B minus 1, G into G minus 1, B minus 2 is equals to this part. Clear? Yes, ma'am. So just rearrange Harini in this way and you will get what should be the value of B, what should be the value of 3. G. Clear? Yes, ma'am. See the next. So if you need total number of selection out of n distinct object, it's going to be 2 raised to power n. What should be the selection? 2 raised to power n. How? See, there are 3 books on mathematics, 4 on physics, 5 on English. How many different collection can be made such that each collection consists of at least one book of English? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? See, we told already a note is given to you that is total number of selection out of n distinct objects are there. That means 2 raised to power n. See how many books are there? It means total selections. Total selection will be 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5. Clear? Yes, ma'am. Is it clear to you?
if the question says at least one book of English, it means at least one book of English means you can just subtract which part that contains only physics and your maths book. So you can say if at least one book of English, right? So a simple formula can also be told you, that will be, what should be that? 2 raised to power 3 all are required, 4 are required, but English 1 is at least 1. So subtract 1 from the English. Is it clear now? It means if you are having at least one case, right? That means 2 raised to power n minus 1. Formula noted. Clear? Yes, ma'am. See, now you can do. In a library, there are 4 science books, 4 math books, 3 political science books. All are of different topics. All are distinct. Number of ways, at least one book of each subject. Question is clear? Now one book of each subject. So at least for all the subjects, friends, Yes, ma'am. it should be 2 raised to power 4 minus 1, at least one science, at least one math, and at least one political science. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone having any doubt till there? It's a direct shortcut how to solve this part. Clear? Yes, ma'am. Detailed view is given to you. You will say 4C1, one book of that, one book of, then multiply another, then multiply. It's going to be quite tedious. It's a direct shortcut. Clear? Okay. Now we are having permutation. And you remember we already done the basic permutation, right? Formula is already known. Now see, in a train, 5 seats are vacant. Question is clear? In a train, 5 seats are vacant, then how many ways can 3 passengers sit? If in a train, 5 seats are vacant, in how many ways 3 passengers can sit? So how to attempt? क्या करोगे भाई? यही बोलोगे 3 सीटें हैं, 5 में से कोई भी बैठ जाए, 4 में से बैठ जाए, 3 में से बैठ जाए, या फिर अब बोलोगे 5P3 लगा दे सीधा ही, दिव्या, नेहा, लोहित. Yes, ma'am. Direct formula should be applied. Yes, ma'am. आर्यन दिया करेक्ट. तो बिल्कुल सही आंसर है जी, 60 ही आएगा आर्यन. दैट्स ग्रेट. चलिए, कौन मेरे को बताने वाला है? हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल कैन बी फॉर्म्ड? रेडी, स्टेडी, गो. लेट मी चेक कौन सबसे पहले. भाई नेहा का आंसर आया सबसे पहले. ओके, आर्यन का भी आया. ओके, हरिनी, ग्रेट. Okay, see friends, 3, 3, 6, 3, 9. 9 things are there, so 9P3. It should be 9 factorial divided by 6 factorial, so 9 into 8 into 7. We already know what should be the calculation. It should be 504. Agree? Yes, ma'am. See next. This question was already done in the last session, remember? 3-digit number, if no digit is repeated, take 1 minute, maximum 1 minute to solve this.
दैट्स ग्रेट। भाई बच्चों का आंसर तो करेक्ट आया है, बहुत ही आसान था। व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज 1 to 9, इट मींस 9 digits are there, 9p3, right? So answer should be 504, right everyone? Avni, clear? Gaurav? Okay, so next question is visible. Yes, ma'am. Okay, so be quick. Hi Pujita. क्या बात है जी, नेहा का आंसर आ गया। 4-letter words from the word logarithm. Any word is repeating? No, na? No, madam. 4 for 8 to 10. So 10p4 should be the answer. Right, everyone? Yes, ma'am. Great. चलिए, it was a question in 2021. First, you guys will look at the question, read it out, try to solve it out, then we will solve. He is done. Or facing difficulty. Do everyone know what is palindrome? Everyone know very well what is palindrome? The number which you either read from the starting or either read from the ending, it will have same the numbers from beginning as well as end. Is it clear, everyone? What is palindrome? Yes, ma'am. Yes. So they said the number of 6-digit palindromes which are divisible by 55. See, if you're talking about number divisible by 55, it means the number should be divisible by 5 and 11. So to check number is divisible by 5 or not, it's quite easier, right? Clear? And it's very much sure. Think about this. Either the number should be divisible by end by 0 or 5.
But if the number should end by 0, it must start by 0 also. Yes or no? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the number is ending with 0, it must start with 0 also, because it shows a palindrome. Yes. एंड दिया अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप सोचिए वो तो 5 डिजिट नंबर ही रह गया, क्योंकि 0 तो उसको 6 डिजिट नहीं बनाएगा स्टार्टिंग में. क्लियर? Yes, ma'am. तो ये केस तो इग्नोर हो गया. इट मीन्स द नंबर शुड ऑलवेज एंड विद 5. क्लियर है? एक बात सबको क्लियर है? तो स्टार्ट विद 5 ऑल्सो. एक क्लू मिला सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे का मुझे सोचना है कि भाई अब मेरे पास जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, राइट? तो अब मेरे पास जो नंबर्स की ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास कुछ ऐसा रहेगी कि अगर यहाँ पे ए बी होगा तो ये बी ए होगा, राइट ना? अगर ये ए बी होगा तो ये बी ए होगा. व्हाट यू से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how to select numbers? And if the number is divisible by 11, how to check? किसी को पता है कि 11 से divisible वाले नंबर को कैसे चेक करते हैं? जो आपका odd डिजिट, जैसे आपका ये 1 है, ये 3 है और ये 5, इनका जो सम होगा, इन तीनों नंबर्स का सम होगा, वो इन तीनों नंबर्स के सम के या तो इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या 0 होना चाहिए. तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि सेम ही नंबर है, तो 0 होगा. क्या कहते हो? बात क्लियर हुई? इज क्लियर? यस मैम. तो Yes, इसका मतलब मुझे तो बेसिकली सिलेक्ट क्या करना है, मुझे ए और बी सिलेक्ट करना है. अगर आप सोचा जाए तो भाई दोनों के पास 10-10 ऑप्शन है, तो 10 into 10 कितने वेज पॉसिबल हो जाएंगे बच्चे? हाउ मेनी टोटल वेज आर पॉसिबल? 100 वेज आर पॉसिबल और नॉट? Yes, ma'am. किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? Anyone having doubt in this question? Well, how many words of 4 consonant 3 vowels can be formed from the letter 6 consonant 5 vowels? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिलेक्शन नहीं पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ मेनी वर्ड्स. क्लियर है? तो इसका मतलब सिलेक्शन प्लस परमुटेशन. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कहेगा? 6C4 कर लीजिए, 5C3 कर लीजिए, इंटू 7 फैक्टोरियल कर लीजिए बच्चा पार्टी. Yes, ma'am. Anyone any doubt? Boys, बढ़े आगे. यस मैम. देखिए नेक्स्ट, ध्यान से, टेक योर टाइम. There are 6 periods in each working day of a school. The number of ways in which 5 subjects can be arranged such that each subject is allotted at least 1 period, no period remains vacant. Clear है? 2 मिनट का टाइम दो. 2 minutes.
हाँ जी बिट्टू, डन। बच्चा पार्टी डन। देखिए, सबसे पहले लेट सेलेक्ट 5C1. Why? We are selecting one subject which is going to be repeated. Then that subject should be repeated in 2 periods. So 5C1 into 6C2. This problem is sorted. Into 4 factorial, the subjects which are not going to be repeated in that day. Clear? सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? भाई सबसे पहले 5 में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, फिर उस सब्जेक्ट को हमने बोला कि भाई 2 पीरियड्स में कौन सा सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर 4 पीरियड 4 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो अपने परमुटेट होते रहेंगे। क्लियर है? क्लियर? अरे कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आता है बंडल मेथड। देखिए ध्यान से, आप लोगों को काफी लोगों ने ये पढ़ा होगा। द नंबर ऑफ ways in which 5 mathematics, 4 physics, 2 chemistry books can be arranged in a shelf if the books on the same subject are kept together. तो इसको बोलते हैं ना बंडल मेथड हरिनी। इट मींस ऑल 5 बुक्स ऑफ मैथ शुड बी kept together, all 4 physics books should be kept together, all chemistry books should be kept together. Is it clear? Right now? Yes, See, let's have one bundle of math, another bundle of physics, and another bundle of chemistry. If you say these are the 3 things, so they will be permutated. Then math are 5, so they can be permutated with each other. Physics can be permutated with each other. Then chemistry can with itself. So this should be the answer, everyone. Yes or no? yes मैम। It was a question in 2020. थोड़ा ध्यान से देखिए. 2 families with 3 members each. One family with 4 members are to be seated. 2 families के पास, यानी कि एक फैमिली के पास 3 मेंबर्स हैं, एक फैमिली के पास 3 है, और एक तीसरी फैमिली जो है उसके पास 4 मेंबर्स हैं. ठीक है जी. In how many ways can they be seated so that same family member are not separated? कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई है? क्या कहते हो? समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? अवनी, आर्यन, अनुराग, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। चलिए ट्राई करिए, फिर मुझे बताइए, आंसर दीजिए.
Yes, done. कितना आंसर आया? बी. Perfectly all right है जी. देखिए, 3 things are there, so they will be permutated, right, Aryan? 3 factorial, 3 factorial, 4 factorial. So 3 factorials cube into 4 factorial, right, Avni Diya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are having a gap method. See, ध्यान से देखिए, ध्यान से learn it. In how many ways 5 girls, 3 boys stand in a row so that no 2 boys are together? Clear? तो भाई जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना होता बच्चे, पहले किसको बिठा लो? गर्ल्स को बिठा लो, फिर एग्री? इज एम क्लियर? नो टू गर्ल्स, 2 गर्ल्स बॉयज को इकट्ठे नहीं बिठाना, तो पहले गर्ल्स को बिठा दीजिए. 1 2 3 4 5. एग्री? गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5. राइट एवरीवन? So what should be the permutation for the girls? 5 factorial. How many spaces left? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So boys can be seated in any one of the row. क्या बात clear है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So boy can occupy any one of the place. So what should I write? 6p3? Yes or no? 6p3? Clear? See, the number of words that can be formed with the letters of the word algebra so that the vowels are separated. It means no 2 vowels come together. कितने लोग ट्राई करने वाले हैं? Giving 2 minutes. Okay. So Iron House the attempt कैसे करा बच्चे? इसमें 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल्स हैं. पहले कॉन्सोनेंट्स को रख लिया. गिवन स्पेसेस 5 टाइम्स 5 p 3 कर दिया. आप बोल रहे हो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वोवेल्स हैं. 4 कॉन्सोनेंट है 3 वोवेल. अच्छा, 4 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवेल्स हैं. यस. तो भाई 4 कॉन्सोनेंट है, तो 1 2 3 4 इनको आपने बिठा दिया 4 फैक्टोरियल, राइट? तो 1 2 3 4 5 5 स्पेसेस बची. यस मैम. तो मुझे क्या करना चाहिए? 5p3. 5p3 करना चाहिए. तो मैं ऐसा नहीं करूँ, ठीक है 5p3, लेकिन इसको भी किससे डिवाइड कर दूं? 2 सेम वोवेल आपके. यस मैम. क्लियर है जी? किसी को भी डाउट? डियर स्टूडेंट्स, एनीवन एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? तो बताइए. है किसी को भी कंफ्यूजन? तो बताओ भाई. ठीक.
तो ये आपका ये वाला मेथड था गैप मेथड। अभी अपन देखते हैं कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर 20438 with when repetition of digit is not allowed. No repetition is allowed and you have to make 5 digit number. सबसे पहले क्या थॉट में आता है भाई, 5 डिजिट के लिए कौन सा डिजिट नहीं आ सकता सबसे पहले प्लेस पे? Zero. तो जीरो नहीं आ सकता, यानी कि अगर ये 5 प्लेसेस वाला नंबर है तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, राइट? तो आपने छोड़ दिया यहाँ, इसके लिए पास तो 4 ऑप्शंस बचे, बाकी इसके पास भी 4 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा, कुछ ऐसा ही होगा बच्चों। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. एनीवन? ठीक। The number of 6-letter words with or without meaning using the letters of the word vowel so that all the consonant never come together. क्या कहते हो, कैसे करोगे? Yes. What should be the approach? Yes, done. नेहा, ग्रीन, अनुराग, आर्यन, वत्सल, दिया, गौरव, गीतिका, बच्चे बोलिए। रितु, समीर, शिवरम, सुल्फिकर, लोहित। आंसर के ओके दिया, मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है? बेटा देखिए, ध्यान से सोचिए, लास्ट वाले क्वेश्चन को भी एक अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। मान लो आपको ऐसा नहीं करना, तो अगर नॉर्मल वे में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर लेते तो आपके पास कितने वेज बनते? दिया 5 फैक्टोरियल बनते। Yes, ma'am. और अगर आप जीरो को फर्स्ट प्लेस पे बुक कर दोगे तो उसके पास 4 प्लेसेस बचे, जाने की 4 फैक्टोरियल बनते। तो मैं नॉर्मली 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को माइनस कर देती तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाता। दैट मीन्स मैं 120 माइनस 24 कर देती तो मेरे पास 96 आंसर आता ना डियर? Yes, ma'am. अब ये वैसे ही इस क्वेश्चन को सोचो, कहते हैं नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वोवेल्स सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर।
भाई मान लो सारे, पहले नॉर्मली अगर आप इनको लोगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तो 6 फैक्टोरियल बनेगा दिया। ठीक, तो वॉवल्स कितने हैं? V है, W है, L है, S है, 4 है, तो 4 को 1 मान लो। वॉवल कितने थे? 2, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा अगर सारे कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आएंगे। दिया जी? Yes everyone, if all consonants come together then it should be the 3 factorial into 4 factorial. Agree or not? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नेहा, पूजिता, समीर, सुल्फिकर, सनीशा कि 3 4 कैसे लिया बता दीजिए बच्चे। मैम बता दो एक बार। ठीक है दिया, देख अभी अपन ने बात करा कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखूंगी, यहाँ पे वोवल्स लिखूंगी। ठीक है जी? तो देखिए आपके पास कॉन्सोनेंट कौन से है? V है, W है, L है, S है, और वोवल आपके पास 0 है और E है। ठीक, अगर आपने चारों को एक यूनिट मान लिया तो टोटल कितनी चीजें हो गई दिया आपके पास? इनको एज अ 1 यूनिट काउंट करा कि हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, तो कितनी हुई? एक चीज हो गई ना, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल होगा। लेकिन ये एक चीज है, लेकिन ये आपस में तो परमुटेट कर सकते हैं, तो इनका 4 फैक्टोरियल। तो ये आपकी वो परमुटेशन है जब सारे के सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे आएंगे। और ये टोटल है, अगर टोटल में से सारे इकट्ठे वाली माइनस कर दोगे तो जी आपके पास वो परमुटेशन आएगी जब कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। Yes, ma'am. क्या सबको बात क्लियर है जी? बच्चे अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दे दूं भाई, let me know the permutations, how many letters can be formed if the letter always start with O and end with E, यानी कि मेरा जो लेटर है वो हमेशा वोवल से ही स्टार्ट हो और वोवल पे ही एंड हो जाए, तो क्या परमुटेशन लगाओगे आप? अगर वोवल से ही शुरू हुआ, वोवल से ही खत्म हुआ, तो क्या करोगे? तो 1 2 3 4 रास्ते बचे बीच में, ये चारों तो क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल। नेहा, और ये जो वोवल्स है ये आपस में परमुटेट करेंगे। क्लियर? इफ आई से Yes, द yes, लेटर स्टार्ट विद V एंड एंड विद S, तो कितनी परमुटेशन बनेगी ARN? इधर जो भी आपको लेटर है वो B से शुरू होगा, S से खत्म होगा। 4। 4, तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा बच्चा पार्टी। क्लियर? ठीक है, देखिए नेक्स्ट, number of words which can be formed made out of the letters of the word mobile when consonant occupy odd places। सबसे पहले देखिए कितने लेटर का वर्ड है? 6, 1 2 3 4 5 6। जो ऑड प्लेसेस है उन पे एरो डाल देते हैं, 1 2 और 3। और मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे मार्क करिए। कॉन्सोनेंट M है, B है, L है, और वोवल कितने हैं? O I E। क्लियर? अगर ऑड प्लेसेस पे हमेशा कॉन्सोनेंट बैठेंगे तो उनके पास तो 3 फैक्टोरियल है, तो वोवल्स के पास भी कितनी जगह है बच्चे? 3 फैक्टोरियल ही है। क्या क्लियर है बात? यस मैम। किसी को भी डाउट? no मैम। तो ये हमारा कुछ कंडीशन बेस्ड परमुटेशन था, सिंपल सिंपल वाला। तो आई गेस आज आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट सम कंडीशनल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट? सो दिस वाज ऑल बेसिक। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जस्ट गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी ऑफ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर? And upcoming Sunday, your test will be from permutation and combination, and that will contain the basics also only. Clear? Yes, यस ma'am. मैम। Okay. So next lecture we will start basics of binomial theorem. Is it clear to all? Yes, ma'am. Any query? Any doubt?
and B